देखिए किस तरीके से प्यार जताती हैं, नीचे झुकती हैं और फिर ताबूत से कहती हैं आई लव यू। शहीद पति को देखकर बेहद भावुक पत्नी। मेजर विभूति ढोंडियाल के बारे में आपको कुछ और जानकारी देते हैं। 3 बहनों में सबसे छोटे 34 साल की उम्र मेजर विभूति की। पिछले साल ही शादी हुई थी, 1 साल भी अभी शादी को पूरा नहीं हुआ है। पिछले साल 19 अप्रैल को शादी हुई थी मेजर विभूति ढोंडियाल की। पत्नी निकिता को जो आप देख रहे हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करती है, एमएनसी में नौकरी करती हैं। और इनके जो पिता थे उनका निधन 2015 में हो चुका है। मतलब घर में बूढ़ी मां है, 3 बहनें, 3 बहनों का इकलौता भाई मेजर विभूति ढोंडियाल। और पत्नी को तो लगातार आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी साल भर भी नहीं हुआ शादी को। 19 अप्रैल को पिछले साल शादी हुई थी मेजर विभूति ढोंडियाल की। पत्नी को देखिए किस तरीके से टकटकी लगाए ताबूत को देखते हुए, अपने प्यार का इजहार करते हुए, नीचे झुककर आई लव यू कहते हुए। पौड़ी का रहने वाला है ढोंडियाल परिवार। मेजर विभूति ढोंडियाल मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के बेजरों के पास एक ढोंड गांव है, वहां के रहने वाले थे। तो ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर इस वक्त देश में गम भी है, गर्व तो है इस शहादत पर, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा है। मैं एक बार फिर से मेजर जनरल के सिन्हा का रुख करूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा, जो बात आपने कही, 2001 का मौका, 2008 का मौका और अब ये 2019 है, किया क्या जाना चाहिए जिससे मुकम्मल इलाज हो सके पाकिस्तान का? रुमाना जी, आपने सवाल पूछा है, मौका है, दस्तूर है, और आपके माध्यम से मैं एक समीक्षा करूंगा, वो कटु होगा। देखिए, इससे भी ज़्यादा डेंजरस और इंटेंसिटी में ज़्यादा एक हमारे ही देश के अंदर में खालिस्तान मूवमेंट आप जानती हैं, उसमें एक शहादत भी हुई थी बहुत बड़े लीडर की। उसके बाद जिस तरह से उसको दबाया गया, उसके सामने यदि आप लेंगी, जो घाटी का प्रॉब्लम है, घाटी में आज हम कहते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम है, मगर हम उसको नहीं कर पाते हैं। उस समय फौज और केपीएस गिल एक मुखौटा थे पंजाब में, जो कि और किस तरह से उसको ख़त्म किया था। और केपीएस गिल का एक बयान है कि आप हमें जिस तरह से हम पंजाब में हमें छूट थी, ऐसे आप दे दीजिए तो 2 महीने में आप ये देखिए, बयान आज से बहुत पुराना है, हम इसको सॉल्व। मेरा मानना है कि हम इसको बहुत कम अरसे में इसको पूरा कर सकते हैं। मगर बेईमानी कहाँ है? बेईमानी हमारे अंदर ये है कि हम कहते कुछ हैं और जमीन पे, और ये एब्सोल्युटली हम पैरालाइज हो गए हैं। जो मेन स्ट्रीम, जो कुछ लोग, चंद एक लोग हैं जो कि अपने फायदे नुकसान के लिए देश की इतनी, उनके हाथ खून से सने हैं। जो शहादतें हैं, ये तो हमारे जज्बा है, हमारे खून में शामिल है कि हम देश को कभी भी कश्मीर से को देश से अलग नहीं करने देंगे। मगर ढुलमुल रीति, उसको हम कहेंगे समीक्षा करो। देखिए, वीके सिंह साहब कह रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली सच है। फौज ने, सुरक्षा बलों ने इसको बहुत बार आपको सिचुएशन करके दिया, मगर हम शॉर्ट रह जाते हैं और फिर उसको मगर यदि हम अभी भी नहीं जागेंगे तो देखिए नहीं सर, लेकिन सवाल तो इसलिए उठेगा ना कि आपने जनरल वीके सिंह का यहां पर जिक्र किया, और जब जनरल वीके सिंह ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया 2012 के बाद से दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद इतना बढ़ा, तो हैरानी होती है ना सर, फिर जवाब देगा कौन? 2012 के बाद दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद इतना क्यों पनपा? इस सवाल का जवाब अगर खुद सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह की तरफ से पूछा जाएगा तो फिर हैरानी तो होगी इस देश को। मेजर जनरल के सिन्हा, देखिए, वीके सिंह भी एक सोल्जर है और तगड़े सोल्जर है, मगर मेरे ख्याल से उनके भी हाथ बांधे गए होंगे। मगर उस समय यदि वो कहते हैं कि 12 में, और एब्सोल्युटली एक करेक्ट है, बहुत
हर तरीके से सिक्योरिटी फोर्स के तरह इसको जमीनी हालात ठीक कर दी गई थी। फिर हमारी पॉलिसीज, हमारी एम्बिशंस, हमारे हर लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो सर आपका क्या इशारा जो राजनीति में प्रयोग हुआ, जो राजनीति में प्रयोग हुआ प्रदेश की राजनीति में कि बीजेपी और पीडीपी की जो साझा सरकार बनी, कि आप उसे यहां पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? प्लीज खुलकर बात कीजिए मेजर जनरल के सिन्हा। मैं खुल के बात कर रहा हूं, मैं खुल के ही बात कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं, पीडीपी जो है उसके पूरे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स आप सुनती हैं, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट बार बार नाम आता है, चाहे वो कुलगाम है, चाहे अनंतनाग है, पुलवामा है, या इन शोपियां हैं, इसके अंदर में पूरे ओवरग्राउंड वर्कर्स उनके हैं और वही आतंक का फैक्ट्री है। देखिए वहां के भोले लोगों को आप मत बताएं। मैं आपको फिर एग्जाम्पल देता हूं। 100 घंटे में ही यदि आप 2 बड़े आतंकवादी जिसके लिए पूरा नेटो लगा था उसको बर्बाद नहीं कर पा, तो ये केवल लोग जो हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, मगर इसकी नैरेटिव अभी भी टीवियों में दूसरा आता है। आप वो दिखाते हैं कि किस तरह से लोग वहां पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसके बाद हम उसमें एक्शन नहीं लेते। किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर उसको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज घर चले जाओ, तो नैरेटिव पैदा करते हैं ये लोग। और हम उन लोगों से जो एक्चुअल इसके परपिचुएटर हैं उसमें हाथ नहीं डालना चाहते। उसमें उतने ही शामिल हैं, उतने ही लिप्त हैं ये लोग, क्योंकि इनको कोई नहीं, इनकी तो आपने नहीं हटाई सिक्योरिटी, वही सिक्योरिटी लोग इनको सिक्योरिटी देते हैं और अपने जानों में अपने ऊपर गोली। आपको यह बताइए, जब हमें पता लग गया कि इस घर में पिन पॉइंट टारगेट में इस गांव में यहां छिपा है, उसके बाद फायर ड्रॉ करने के लिए क्या जरूरी है विभूति के या चित्रेश को अपने ऊपर फायर ड्रॉ कराने के लिए? मगर हमारे जब हाथ बांधे जाते हैं, हमारे जब ये होता है, हम क्यों नहीं गनशिप जिस तरह से एक प्रोफेशनल लोग करते हैं, मगर हमें मेजर जनरल के सिन्हा, मैं आपको रोकूंगी, सीधे हमें चलना होगा। इस वक्त आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पुलवामा हमले के बाद आर्मी की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के सामने आर्मी के बड़े अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं। पुलवामा आतंकवादी हमला जिसमें सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर फिदायीन हमला किया गया, आत्मघाती हमलावर ने सीधे एक्सप्लोजिव, the electronic media, the print media, and the local journalists who are here with us today. At the outset, again on behalf of the complete security forces team in Kashmir, I would like to pay our homages to the brave martyrs of the CRPF who attained martyrdom on the 14th of February in the Pulwama explosion. Our heart and our feeling and our sympathies and our condolences go to the families. I would also like to wish them and their wards all the very best for the future and assure them that security forces are with them and will always remain with them. I also like to pay homage to the martyrs of yesterday's operation, 4 from the army, including a major, and Havaldar, 1 head constable from the JKP from Karna. I also like to take this opportunity to give an update on the injured of the CRPF convoy attack on 14th. All of them in the 92 hospital base hospital are undergoing an excellent treatment, and I have been meeting them twice a day every day. All of them are out of danger. They all have spoken to their families and they are doing very well. Similarly, the injured of yesterday's operation, including Brigadier Harbir Singh of Army, DIG Amit Kumar of the JKP, and other officers and men from the Army and the JKP are doing very well, and they are excellent condition and they are out of danger. They are being looked after by the best doctors available here. Now coming down to the operation yesterday. Ever since 14th of February convoy attack on CRP, we were tracking the top JEM leadership in Kashmir Valley. As you are aware, that convoy attack was carried out by Jaish-e-Mohammed of Pakistan, and it was being controlled from Pakistan.
with active support of ISI and the Pakistan Army. The local commanders, most of them Pakistanis, who were in charge of controlling, coordinating, fabricating and execution of this operation, were the main people of the JEM top leadership in the valley. Since this leadership of the JEM was on a track, ever since this incident happened, and day before night, at midnight, on specific information, we hit this module. And I'm happy to inform the country that in less than 100 hours, we eliminated the JEM leadership in the valley, which was being handled by JEM from Pakistan. The details of the terrorists killed, 2 Pakistani terrorists and 1 local conduit, the terrorists, have been shared by you by the police in the yesterday's press release. I would also like to tell one thing to the parents of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated unless he surrenders. I also like to inform you that success of this operation within less than 100 hours was a result of complete synergy between all security forces, may it be Army, JKP, SOG, CRPF or the intelligences. We are working in complete cohesion and unison. In the end, once again, with prayer on my lips and pride in my heart, I pay my homage to all the martyrs of 14th February convoy attack and yesterday's operation. And now I request IGP Kashmir and IG CRPF to give their version, and thereafterwards we will take on any questions which you may have. Thank you. I will just not we had given a detailed press release yesterday, and the detailed press release has been issued yesterday, and I must say that it was an excellent operation. The coordination and the synergy which was reflected on ground, and on specific information this operation was launched, and as we know that 3 top terrorists were eliminated of Jaish-e-Mohammed. Regarding the investigational details of the case, the investigational details of the case will be shared with you as the investigation progresses, and the other findings like the details regarding the recovery and other details we'll also share with the media as and when the investigation progresses. Thank you. Sir, wait. I would start by paying my deepest homage to the martyred personnel of the Indian Army and the JKB yesterday, and also to the martyred men of the CRPF on the 14th. I would like to assure everyone, and above all the family members of the martyred brave men, that whatever it takes, whatever it costs, we as the Corps Commanders already said, we as a team would ensure that all the people involved in these attacks are booked as per law. We stand by our families, by our martyrs, and I would like to assure everyone of our resolve to take this to its logical end.
At the same time, I would, since the media is here, I would like to highlight one phone number, that is 14411 of the Madadgar. Our helpline has been helping Kashmiris all over the country in the wake of this attack, and I'm happy to inform that a lot of Kashmiri students have approached this helpline for help all over the country. Everything is under control, and all Kashmiri children studying outside have been taken care of by the security forces all over the country. But still, if there are any issues, I would appeal to them to approach this number for any help they require. Thank you. सर मैं मनीष ऊंची न्यूज से सर मैं मनीष ऊंची न्यूज से सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पुलवामा में जो कामरान पर अटैक हुआ इतने घंटे बीत चुके हैं, थोड़ा हमें बताइए कि किस तरीके से जो आतंकियों ने जैश ने प्लानिंग की, कैसे इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव को इकट्ठा कर पाए, क्या वाकई में पहले से कोई इंटेलिजेंस इनपुट था, किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन बता सकें? Okay, gentlemen, this is a matter of investigation. The investigation is at a very advanced stage. Although we are aware of a lot of details, but I would not like to share the details at this moment, and I hope you will understand our concern, since all the details are under investigation. सर कल का जो एनकाउंटर है, क्या वजह है कि आर्मी को ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा? क्या ये जैश के जो मिलिटेंट थे, क्या ये वेल ट्रेन्ड थे, या आपकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी थी? बिकॉज यू हैव सफर्ड ह्यूज लॉसेस. ओके, जो कल का ऑपरेशन था स्पेसिफिकली, क्योंकि जो इंजरीज और जो हमारे मार्टरडम्स हुई हैं, मार्टर्स हमारे हुए हैं, इसके दो तीन मेन रीजन हैं. फर्स्ट वन, we did not want the civilian casualties to happen, and as you are aware, other than the one civilian fatal casualty which happened due to the terrorist fire in the initial stages itself, not a single civilian has been injured or killed in this encounter, which lasted more than 17 hours, and that is the risk we took. We took it on our chin. And one more thing I would like to tell you, Brigadier Harbir Singh, who is also injured, he was on leave at home. When he realized that in the midnight the operation has started, he cut short his leave voluntarily, he rejoined, and he came back to Kashmir and went straight to the operational site. And he was leading his men from the front. So including DIG Amit Kumar, again he was leading his men from the front, and you would see the number of casualties of officers and the senior NCOs. It shows one thing, that our commanders were leading the operation from the front, and we were trying to achieve nil civil casualties, which has resulted in casualties to our boys. And I would like to assure you, this will continue. But at the same time, since this question is asked, I also want to convey a message to the Awam. Please stay away from the encounter site during the encounter and after the encounter, for your own safety, because during the encounter, during the crossfire, something can go wrong. And after the encounter, because of the leftover explosives, it may cause damage or injury or death to anyone who comes to that place. So it's my humble request to everyone, please stay away from the encounter site during and after the encounter. Gentlemen, please, we'll go one by one, we'll take all your questions. One at a time. I told you I'll moderate the press conference. Please, Mufti Islam. Sir, are there more challenges of similar kind of attacks like car bombs or Fidain? And how are you going to prevent them? What are the measures in place where you're going to, prevent them or stop them? This type of a car bomb, which happened on the CRP convoy on 14th, as you are all aware, it happened after a long time in Kashmir, and with this type of intensity, it had not happened earlier. However, similar incidents have happened in the other countries, in Syria, in Afghanistan, in Pakistan earlier. And since this modus operandi now has been started by the terrorists, we are alive to it. We are keeping our tracks open, and we are keeping all options open to deal with this type of modus operandi in future. Nazir, please, sir, please wait. Sir, Nazir, there are 2 points. One, Kamran and Fahd Screen, you said you emulated the leadership of Jaish. Why was Kamran mastermind of the suicide attack on CRPF? Number 2, Mr. Zulfikar Hassan, IGP CRPF, talked about the stress Kashmiris are facing outside the country. Army has this Sadbhavna program for last more than 2 decades to win hearts and minds of the people. Whatever is happening because of in the wake of this attack on Kashmiris,
is that a setback to your strategy to win back heart? तो पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद जो ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया गया, जिसमें 3 आतंकवादियों को ढेर करने में, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का जम्मू कश्मीर का कमांडर कामरान भी शामिल था। उसके बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेना की 2 टुक सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर में जो बंदूक उठाएगा उसका खात्मा किया जाएगा। फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।